All right. So yesterday we were talking about moment of inertia of various 2D and 3D objects, and we particularly talked about a kind of annular disk. Okay, this is something that we obtained. So today also we will be calculating moment of inertia of various objects. So more specifically, we will go into finding out the moment of inertia of a cylinder, of a sphere, and of a cone. I think time should be sufficient for these. So yesterday we talked about a ring of considerable width. So you had something that looked like this. सर पेज में प्रॉब्लम आ रही है, दिख नहीं रहा है स्क्रीन में। सबको आ रही क्या? दिख रहा है, अब देखो सर। ओके। So you have this kind of shape, a 2D surface, let's suppose, and you calculate the moment of inertia with respect to its diameter. Okay, let's suppose you calculate the moment of inertia with respect to its diameter. Rotation of with respect to its diameter such that its radius is given by, inner radius is r1 and outer radius is r2. Its mass is capital M. Then we obtain that the moment of inertia about diameter id is equal to, कितना obtain किया था हमने? 1/4 m into r1 square plus r2 square. Okay, 1/4 into r1 square plus r2 square. Okay, this is what we obtained. Okay, so from here what we can do is we can take the further analysis. Like for example, we can say that if r1 is equal to 0, then object becomes circular ring या disk. disk. If object Disk, if r1 is equal to 0, object becomes disk. So then with respect to diameter, you have 1/4 m 0 plus r2 square of radius r. So this becomes id is equal to 1/4 m r square. Okay, so for a disk, the moment of inertia with respect to the diameter is 1/4 mr square. Now if I do further analysis for r1 is equal to 0 and axis perpendicular to the plane of disk. So for example, if I say that this is your disk, and you are calculating the moment of inertia with respect to, let's suppose, the z-axis. Okay, z-axis. And if you want to calculate the moment of inertia with respect to the z-axis, then what can you do? How can you use this? Perpendicular symmetry. Yes, you can apply the perpendicular axis theorem. So let's suppose there is a x-axis and there is a
y-axis, then you can say that according to perpendicular axis theorem, what you can do is iz is equal to ix plus iy, and because of symmetry, due to symmetry with respect to the x-axis and the y-axis, you can say that ix is equal to iy, which is equal to 1 by 4 mr square, which is moment of inertia with respect to the diameter. So this is 1 by 4 mr square plus 1 by 4 mr square, or iz is equal to 1 by 2 mr square. Okay, so this is the moment of inertia of a disk with respect to or about an axis perpendicular to its plane and passing through its center of mass. And सर रिंग और डिस्क अलग अलग होती है क्या? क्या? Excuse me सर, यस, रिंग और डिस्क अलग अलग होती है ना? हाथ उंगली में आप रिंग पहनते हो, हाँ सर, और पुराने ज़माने में सीडी ड्राइव देखा था, हाँ यस सर, दोनों सेम होता है कि अलग होता है? अलग अलग होता है वैसे। हाँ, तो फिर ये हो गया तुम्हारा रिंग जो तुम उंगली में पहनते हो, और पुराने ज़माने में जो सीडी डिस्क आते थे वो इस तरह का होता था. सो वन इज़ सिंपली अ सर्कुलर सॉर्ट ऑफ अ रिंग, द अदर इज़ अ 2D सरफेस, है ना, जो सीडी ड्राइव्स में पहले डालते थे. आई डोंट नो आप लोग को पता है कि नहीं, पहले जो है पेन ड्राइव्स नहीं हुआ करता था, पहले वी यूज्ड टू हैव. नहीं सर, वी आर नॉट ये से पता है हमको उन्हें भी ओके ओके, सर पता है सर, पता है, ठीक है, लेकिन कुछ जनरेशन बाद नहीं पता होगा बच्चों को बिकॉज सडनली वो गायब हो गया. पहले जो है गाने ट्रांसफ़र होते थे सीडी ड्राइव के थ्रू, गाने मूवीज़. Anyways, so let's go to the next this thing, which is the cylinder. Okay. Okay, now cylinder को करने के लिए you can use either the concepts for associated with a ring, or you can either use the concepts associated with a disk. There are various different methods of doing the calculations. So I am going to do my own particular way, which is the moment of inertia of a hollow cylinder. I am going to find moment of inertia of hollow cylinder. Okay, आगे बढ़े यहाँ से. यस सर. Okay, यस सर, so let me draw the diagram first. So you have a hollow cylinder here having its inner radius and outer radius. Okay, okay, I am only right now interested in finding out its moment of inertia about an axis which is perpendicular to its base and passing through the center, passing through the axis of the cylinder.
about an axis perpendicular to its base and passing through the geometrical axis of the cylinder. Okay. Now, to calculate this by the same methods that we have been doing for larger bodies like we did yesterday, you can either assume that this cylinder, this hollow cylinder, is made up of some smaller elemental structures. For example, you can imagine that this hollow cylinder is made up of these kind of annular discs put on top of each other, and then you integrate it. This is one way of doing it. Or you can imagine that this cylinder is made up of a very tiny cylinder and then integrate over it. Okay, it depends upon you. Or you can take some kind of a very small volume element and then do a volume integration. So whatever method you apply, the answer should finally come out to be the same. So let me say that, let's suppose that this is the z-axis, okay, and we are interested in finding out the moment of inertia with respect to the z-axis, which is perpendicular to the base and and passing through the geometrical axis. And let's suppose this radius, inner radius is r1, and the outer radius is r2. Okay, and I am going to imagine that there is a very tiny cylindrical surface. Like, let's suppose you take an aluminum foil, a paper, and then you roll it. You end up getting a cylindrical surface of very tiny width. Okay, and then you put another such cylindrical surface on top of it. Okay, you roll another paper on top of it, and then you put another cylindrical surface on top of it. You roll another paper on top of it, and then you roll another paper on top of it. You will end up getting this kind of a hollow cylinder having different inner and outer radius. Yes, this is what I'm going to do. So I'm going to imagine that there is a very small cylindrical surface at a particular distance r, and then I'm going to integrate from r1 to r2 so as to obtain the moment of inertia for the entire configuration by looking at the moment of inertia of that very particular cylindrical surface. Okay, so let's suppose that you have a very small, very thin cylindrical surface. Okay, okay, and this cylindrical surface is at a distance of, let's suppose, r. Okay, r. Okay, this is r2 and this is r. Okay, this is what I'm doing. I'm trying to basically integrate over r1 to r2. Okay, so r1 here is the inner radius, r2 is the outer radius, and r is the distance of thin cylinder from axis. Okay, and let's suppose that the width of this kind of a extremely small thin cylinder is given by dr. It has a mass of dm and a volume of dv. Okay, so let us calculate the various these things, quantities now. Setup समझ में आ गया कैसे हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you have understood what we are trying to do. So let's suppose that this has a uniform mass density,
which is given by rho. So rho is nothing but equal to m upon capital V. What is V? Pi r2 square minus r1 square. What is the distance? Let's suppose the height is L. Okay, this is the volume of the cylinder. Yes. So and uniform mass density, and rho is also equal to dm upon dv. All right, which simply means that dm is equal to rho dv. So rho is equal to m upon v. What is dv here? dv is equal to 2 pi r dr L. Okay, dv is simply equal to 2 pi r dr L. So this is equal to m upon v is equal to pi r2 square minus r1 square L 2 pi r dr L. So therefore L gets cancelled here and pi gets cancelled here, and you're left with dm is equal to 2 capital M r dr upon r2 square minus r1 square. Okay, yes, this is the dm, the mass of this particular this thing. ये जो आपका cylindrical structure दिख रहा है, ये cylindrical structure का mass, extremely thin cylindrical structure that you can see here. This extremely thin cylindrical structure has a mass of dm. That's it. So now if I calculate the moment of inertia of this very thin cylindrical structure with respect to the z-axis, then I can simply integrate it over r1 to r2. That's it. So what is the moment of inertia of thin cylindrical surface of width dr about z-axis? कितना होगा, बता सकता कोई? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm dm r square. Yes, dm r Yes, square, ma'am. because it is simply a ring that is it is simply a surface made up of a large number of rings, all of them being equidistant from each other. तो ring का जितना आपका moment of inertia है with respect to the z-axis, the same is for this, because it is just rings superimposed on top of each other. Therefore every single mass element is at the same distance. So इसको भी मैं दिखा सकता हूँ, but I think this is kind of obvious. So this is equal to dm r square. So moment of inertia of hollow cylinder about z-axis is therefore equal to Iz is equal to integration of dm r square from r1 to r2. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक सबको क्लियर है ना? All right. So now the next challenge is Yes, just sir. integration. That's it. This is the easier part of this thing. So you just integrate it from r1 to r2. dm is nothing but 2 capital M r upon r2 square minus r1 square r square dr. That's it. Let's integrate this. So 2 capital M divided by r2 square minus r1 square integration of r cube dr from r1 to r2 simply going to become 2 capital M upon r2 square minus r1 square. So this becomes 4 r to the power 4 r1 to r2. This is equal to 2m upon 4. So ये बन जाएगा 1 upon 2.
1/2 r2 square minus r1 square, r2 to the power 4 minus r1 to the power 4, which is quite simply put m/2 r2 square minus r1 square. So this becomes r2 square minus r1 square into r2 square plus r1 square. So okay, these two terms get cancelled, and finally you have half m r1 square plus r2 square. So finally Iz is equal to half m r1 square plus r2 square. Okay, this is the moment of inertia of a hollow cylinder with respect to an axis perpendicular to its base and passing through its geometric axis, having inner radius and outer radius r1 and r2 respectively. ठीक है, clear है? Yes, sir. Now from here you can also calculate for special case scenario that when r1 is equal to 0, okay, when r1 is equal to 0, then we get, क्या बन जाएगा ये Solid configuration? cylinder. This is simply going to become a solid cylinder. Then we get the moment of inertia of a सॉलिड सिलेंडर. आप सॉलिड सिलेंडर को कैसे कर सकते हो, अगर एग्जाम में आता है सॉलिड सिलेंडर का फाइंड आउट करने के लिए, आप यहाँ पे ये सब सेम करके यहाँ इंटीग्रेशन में ये 0 डाल देना बस यहाँ पे, दैट्स इट, 0 to r डाल देना, बात खत्म. then that you will get the answer for solid cylinder. So then we get the moment of inertia of a solid cylinder of radius r about its geometrical axis. Okay, so that becomes Iz is equal to half m r square. This is the answer for a solid cylinder. All right, this is clear? Yes, sir. Okay. सर कैसे रखी आपने, वो बता दो एक बार. कौन सा? डीवी की वैल्यू रखी थी ना आपने वहाँ पे. डीएम की वैल्यू? डीवी हाँ, डीवी. ये जो मैंने येलो में बनाया है सरफेस, येलो में जो बनाया है सरफेस, इसका वॉल्यूम कितना है? 2 पाई आर डी आर इंटू एल है ना. ये जो मेरा सरफेस है इसका रेडियस है आर और इसका विड्थ है डी आर, तो सरकमफरेंस कितना हुआ? 2 पाई आर हुआ. हाँ सर. एरिया कितना हुआ? 2 पाई आर डी आर हुआ. वॉल्यूम कितना हुआ? 2 पाई आर डी आर एल हुआ. 2 pi r is the circumference, 2 pi r dr is the area having width dr, and 2 pi r dr l is the volume. Okay sir. Okay. ठीक है, this is clear. Can we move ahead to the next? Yes, sir. Okay, so let's move ahead to the next, which is that of a solid sphere. Okay, so we have done the case for a cylinder. अगर solid cylinder आता है तो ये same problem आप करना. Instead just put, so for solid cylinder substitute inner radius with 0. Substitute inner radius with 0, that's it. Okay, so this becomes moment of inertia of a solid cylinder. So let's do solid cylinder. Moment of inertia of a solid cylinder. स्फीयर था ना सर. तो अभी करी Sorry, नहीं लग रहा है, sphere. ये तो करी लगी. क्या चीज? solid sphere, sorry. Sphere.
Okay, let's move ahead. So we want to calculate the moment of inertia of a solid cylinder with respect to an axis passing through its diameter. Okay, with respect to an axis which is passing through its diameter. So if rotation is happening of the solid cylindrical mass distribution with respect to an axis which is passing through its diameter, in that case moment of inertia kya hoga for that object. So let us calculate that. That's not really that difficult to obtain. If I slice the solid cylinder by a very sharp knife, what kind of surfaces will I get? Disk. So if I slice up the solid cylinder by very a sharp knife, okay, along a direction which is perpendicular to its diameter, then I end up getting a large number of disks. So what I'm going to do is I am basically going to find the moment of inertia of a disk, which we already know, with respect to an axis perpendicular to its plane, and then I'm going to integrate over a certain range. So for example, what I'm going to do is first find out what is the moment of inertia of this disk, and then what is the moment of inertia of this disk, and this disk, and this disk, okay, and this disk, and this disk, and this disk, ऐसे करके. Now ये sphere तो बना नहीं, but this is what we are mathematically going to do. I'm going to say that the entire sphere is composed of a large number of disks. Okay, this is nothing but a disk. Okay, so I'm going to say a solid sphere is composed of a large number of disks. So if I find out the moment of inertia of one disk with respect to an axis perpendicular to its plane and passing to its center, I can integrate for all the disks that create the mass distribution of the solid cylinder to find out the effective answer that I'm looking forward. So let us define the various parameters. So let's suppose this is the center of the sphere and the radius is r, okay, and the radius of this disk is small r, and this distance is x. Okay, you take a solid sphere, you slice it up by a sharp knife at various points, and then you end up getting a large number of disk structure. Okay, so uniform mass density distribution, uniform mass density rho,
and rho is equal to the mass of the solid sphere divided by the volume, which is equal to, what is the volume of a solid sphere? 4 by 3 pi r cube. So this is equal to 3m upon 4 pi r cube. Okay, where r is the radius of the sphere, radius of solid sphere. Now ये करते हुए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सॉलिड स्फीयर के लिए हम ये कर रहे हैं तो हमें डिस्क मिल रहा है. अगर मैं एक हॉलो स्फीयर लेता तो हॉलो स्फीयर को कट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? रिंग मिलेगा. तो अगर एग्जाम में पूछा जाता हॉलो स्फीयर के लिए तो इन दैट केस यू स्लाइस इट अप इनटू लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स एंड देन यू परफॉर्म द सेम कैलकुलेशंस. ठीक है, परफॉर्म द सेम कैलकुलेशंस आई एम अबाउट टू डू बट यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स इंस्टेड ऑफ डिस्क्स. So uniform mass density of this, and for mass element which is a disk, let's suppose its mass is dm. Okay, so the mass of the disk is dm, and the width is of course dx, and the volume is of course dv. So therefore we can say that the density, if it is uniform mass distribution, is dm upon dv, or dm is equal to rho dv. So rho is nothing but 3m upon 4 pi r cube, and dv is equal to pi r square dx, है ना? pi r square dx. Yes, Yes, sir. Yes, sir. pi r square dx, where 4 pi है सर. pi r square dx है ना, the area of the disk is r and the width of the disk is dx, so it's pi r square dx, where रिंग का होता है पाई आर स्क्वायर सर रेडियस. क्या चीज़? डिस्क का सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है? डिस्क का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर कब से हो गया डिस्क का एरिया? सॉरी सर. सॉलिड स्फीयर का सरफेस होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ हाँ है ना? सॉलिड स्फीयर का सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर होता है, डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ओके सर. है ना, सर्कल का एरिया. सो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ज़ीरो, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे तो इस ट्राइंगल में आप बोल सकते हैं दैट कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ऑलराइट, सो आप इसको कह सकते हैं दैट स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. Yes, so if you substitute this here, it simply becomes dm is equal to, यहाँ पे तो हो गया आपका पाई कैंसिल, and you're left with 3 upon 4 m upon r cube. R square is nothing but capital R square minus x square dx. This is your mass of the disk element. Yes, Yes, sir. we have Yes, obtained sir. the mass of the disk element. Therefore all we need to do is we need to find out what is the moment of inertia of this disk element with respect to an axis perpendicular to its plane. क्या होगा? 1/2 dm r स्क्वायर. Yes, so moment of inertia of disk element about z axis is, let's suppose this is diz is equal to half dm r square, हाफ डी एम आर स्क्वायर, या फिर इसको कह सकते हैं हाफ डी एम कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यस, so finally the moment of inertia of solid sphere about z axis is, solid sphere is made up of large number of disks. Okay, made up of large number of अरे हाफ का फैक्टर कहाँ से लाए हम? हाफ डी एम आर स्क्वायर में डिस्क का हमने क्या ऑब्टेन किया थोड़ी देर पहले? डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर. सर ये- एम आर स्क्वायर
डिस्क का एम आर स्क्वायर कब से हो गया? डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर है ना, रिंग का एम आर स्क्वायर है, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर है बेटा, भूल ये सब चीज़ें याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का, सिलेंडर का और रेक्टेंगल का, इट्स बेटर यू रिमेंबर दिस, इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल लेटर ऑन। डिस्क का विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज हाफ एम आर स्क्वायर, विथ रेस्पेक्ट टू द डायमीटर इज 1/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। So therefore the moment of inertia of the sphere, which is nothing but a collection of a large number of disks going from 0 to r. minus r to plus r, okay, I can say that this is equal to integration of dm upon 2 r square minus x square from minus r to plus r, ठीक है। So this is nothing but half dm क्या है यहाँ पे, dm is equal to 3/4 mr cube into 3/4 mr cube, so integration of r square minus x square to the power 2 dx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes sir. into 3/4 mr cube r square minus x square dx, that's it। अब सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। द मेन थिंग इज, द मेन फिजिक्स इज हियर, यहीं पे है। हमने इसको एक बहुत सारे स्मॉल डिस्क एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। एक डिस्क एलिमेंट का हमने मास निकाला और उस डिस्क एलिमेंट का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, और फिर हमने बोला कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर सॉलिड स्फीयर इज नथिंग बट द समेशन ओवर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द डिस्क्स दैट मेक अप द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। दैट्स इट। नाउ द इंटीग्रेशन इज देयर, इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत आसान है। सो दिस इज इक्वल टू 3/8 m upon r cube, integration from minus r to plus r, this becomes r to the power 4 plus x to the power 4 minus 2r square x square dx, okay, so this is simply going to be equal to 3 capital M upon 8r cube, so this is r to the power 4 x from minus r to plus r plus 1/5 x to the power 5 from minus r to plus r minus 2r square upon 3 x cube from minus r to plus r, okay, let's solve this. This becomes 3 capital M upon 8r cube, so this is r to the power 4, this becomes r minus r becomes r plus r, है ना, plus 1/5, this becomes r to the power 5 minus r to the power 5 becomes plus r to the power 5, and 2r square upon 3, this becomes r cube minus r cube becomes r plus cube, okay, so this is equal to 3m upon 8r cube, so this is r to the power 2 r to the power 5 plus 2/5 r to the power 5 minus 4 r to the power 5 upon 3, so this is simply equal to 3m upon 8r cube into 5 into 3 15, so this becomes 30 30 square r to the power 5 plus minus 16 6 r to the power 5 minus 5 into 4 20 r to the power 5, so this is 16 3 r cube 16 हो जाएगा ऊपर, so ये आपका 30 minus 20 10 plus 6 16 r to the power 5, तो ये r क्यूब हो गया कैंसिल, ये वहाँ पे 2 और 8 से हो गया यहाँ पे 2, so 6 upon 15, so 3 हो गया यहाँ पे 5, 4/5, so this is equal to 2 upon 5 mr square, that's it, done, और iz is equal to 2 upon 5 mr square, this is the moment of inertia of a solid sphere.
ओके सर। Moment of inertia of a solid sphere with respect to its diameter. Moment of inertia of solid sphere about diameter. Clear है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whenever you Sir? yes, सर शरण का माइक म्यूट है सर, आप वो थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए सर, उसको कुछ पूछना तो प्रॉब्लम आ रही है उसको। किसका? शरण शरण। शरण। हाँ, कल जो हो गया था ना, वो राहुल के साथ वैसे ही हो गया उसका। शरण 3 एक डॉट पे सेकेंड। क्लिक करने के बाद प्रेजेंटर बना दीजिए उसको तो। Just give me a second. I'm not able to figure out. हाँ बताओ शरण, क्या हुआ? यस सर, एक्चुअली सर किसी ने शायद मेरे को अटेंडी बनाते समय ना मैं माइक डिसेबल कर दिया था, तो कोई पूरा बात नहीं। मतलब 1 घंटा मैं बिना बोल ही रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पूछो जो भी है, जो भी डाउट से पूछो आप। नहीं सर, अभी तक तो क्लियर था, और जो 2 बार किसी बच्चे ने पूछ लिया तो मेरे डाउट्स उसमें क्लियर हो गए। ओके। यस सर, Ranjana, sorry थैंक यू sir. सर। हाँ okay, no problem. Sorry sir, I was out of station for some urgent work, so could not take to this class. अच्छा, हिमांशु से मेरा, अच्छा हाँ मैनेबल टाउन, हाँ ठीक है बेटा। कोई डाउट है? बेसिकली क्या है कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट आपके पास है तो बेसिकली ट्राई टू break it down into smaller mass elements, maybe surfaces, maybe lines, whose moment of inertia you already know, and then simply integrate the moment of inertia of that smaller mass element to create the entire 3D mass distribution जो आपको चाहिए। उसमें सिर्फ चैलेंज रहता है उस मास एलिमेंट का डेंसिटी फाइंड आउट करना, सॉरी मास एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना, बिकॉज द मास ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट इज नॉट द सेम एज द मास ऑफ द स्मॉल मास एलिमेंट दैट यू टेक। तो वो मास फाइंड आउट आप कर लो एक बार, उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टफ इज एक्सट्रीमली ईजी। कोई भी डाउट है किसी को? सर थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए, ऊपर कर दूं? थोड़ा स्क्रॉल। यस सर, थोड़ा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अच्छा एक बात बताओ, ट्यूसडे को मेरा क्लास 3 से 5 है ना? यस सर। तो आप दूसरे किसी Yes, टाइम पे sir. फ्री रहते हो क्या ट्यूसडे को? No, sir. नो सर, ट्यूसडे तो तो बहुत ट्यूजडे बिजी है। तो देता है मंडे सर। को? कल मंडे, कल हम लोग थोड़ा सा फ्री होते हैं, थोड़ा लेट अगर आप करेंगे तो। कब कब? अराउंड एसीसी कल का शायद 1 o'clock पे है, तो शायद अगर आप 2 o'clock से 4 ले लेंगे तो शायद हो सकता है। सर आई गेस इंग्लिश की मैम जो है वो एक्स्ट्रा क्लास लेंगी शायद, बोल रही थी कल। तो किस टाइम पे सब लोग फ्री हो सकते हैं कल? ये टाइम पे सर, शाम को। कितने बजे के बाद? 2 बजे के बाद? सर रात को लें Sir, 3 to 5. Sir, 3 to 5. 8 से 10। 8 से 10 बोल रहा। रात को कर लो सर, 7 से 9, 8 से रात 10। को फिर दिक्कत हो सकती है ना किसी को। सर 3 से 5 कर लो। नहीं सर, तो सर वेडनेसडे ले 7 लेते बजे हैं। से कर लीजिए। नहीं सर, रात को किसी को दिक्कत नहीं है सर। रात को वेडनेसडे, प्रॉब्लम आराम से होगी। रात को किसी को दिक्कत वेडनेसडे नहीं 2 के है? बाद। नहीं सर। नहीं सर, क्लास है। में नो सर, 7 बजे से कर लीजिए। CR is there in the class? Anura, are you there? Anura, are you there in the class? अनुर को भी ऐसे अनम्यूट तो नहीं कर दिया सर? अच्छा एक काम करो, आप लोग का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है ना? यस सर। यस तो एक बार मुझे Yes, sir. कंसेंसस बता देना, रात को अगर शाम को मैं क्लासेस रखूँ तो आर यू गाइस ओके विद इट? इफ 90% ऑफ द क्लासेस ओके देन आई कैन टेक क्लासेस इन द इवनिंग आल्सो, नो प्रॉब्लम। वैसे इवनिंग में कंफर्टेबल रहता हूँ, दिन के टाइम पे शाम के टाइम पे है ना एग्जॉशन हो जाता है, नींद आ जाती है लोगों को,
लेकिन 7 से 9 10 सर, परफेक्टली फाइन, अगर आप लोग ओके हो तो ठीक है। तो एक बार आप ग्रुप में डिस्कस करके मेरे को सर बता सकते हो ओके कंसेंसस। होंगे, आप क्लास लीजिए। क्लास शिफ्ट कर दीजिए आप सर, हो जाएंगे सर, रख दीजिए। कर ले सर, रात के रखो। अरे नहीं यार, किसी का कोई अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो फिर बाद में आई डोंट वांट टू हैव सम काइंड ऑफ दिस थिंग डिसएग्रीमेंट। तो एक बार आप डिस्कस करके मेरे को बता दो, ठीक है। फ्लिम्जी एक्सक्यूजेस नहीं, इफ एनीबडी हैज सम जेन्युइन प्रॉब्लम आई डोंट नो, मे बी दे मे हैव, रात का टाइम है ना, तो अगर एवरीबडी इज ओके तो मैं ले लूँगा। एक बार आप डिस्कस करके मेरे को बता देना, कन्वे कर देना, अनुर को बोल सर, देना किस कि टाइम की बात कर रहे हैं आप? किस टाइम? शाम को 6 से रात को 9-10, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल, आई एम ओके, आई एम फ्री, नो प्रॉब्लम। 7 PM शायद। 6 से 9-10 बजे तक आई एम कम्प्लीटली ओके, ठीक है। आप एक बार बस मेरे को बता देना, फिर मैं शेड्यूल कर दूंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। टेल मी वन थिंग, ओके, सॉलिड स्फीयर अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट टेंजेंट कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। What is the moment of inertia of a solid sphere about tangent? 7/5 सर 7/5 7 by 5 mm. 7/5 mr square. The moment of inertia of a solid sphere about tangent. Okay. कैसे करना है पता है ना? सर पैरेलल एक्सिस। यस सर, पैरेलल 2/5 mr square, ये तो हो गया आपका with respect to the diameter। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप अगर अप्लाई करेंगे तो फिर ये डिस्टेंस आपका बन जाता है r, so this is nothing but mr square, so this is 7/5 mr square, ठीक है। मैं अगर आपको एक कम्प्लीटली नया प्रॉब्लम देता हूँ 3D ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं आपको 5-10 मिनट दूँ तो कैन यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, क्या यू कैन ट्राई एटलीस्ट? यस सर, यस सर। Yes, फुल sir. ट्राई कर लेंगे सर। ठीक है ना। अंत तक खुद जब इंजन चलेगा तब इंजन का जो फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा, स्मूथ होगा ना, क्योंकि अभी तक तो मैं ही चला रहा हूँ गाड़ी। थोड़ा सा मैं आपको एक मौका देता हूँ खुद से सोचने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन, कोन समझते हो ना? यस। आइसक्रीम कोन खाया है ना कभी? यस सर। उसको उल्टा पकड़ Yes, लो, हो sir. गया कोन। तो वो हो गया आइसक्रीम आपका कोन। बचेगी। हाँ, ये हो गया आपका कोन। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन? Please calculate and tell Give me. us 10 minutes. 10 minutes. Yes, I'm giving you 5 to 10 minutes. Please try to think on your own. Basically, based on what we have done, you just divide a 3-dimensional mass distribution into smaller mass elements whose moment of inertia you know, and then you integrate over whatever range you need. सर हाइट h ले लें? मैं बता रहा हूँ, सारे क्वांटिटीज में दे रहा हूँ, एक सेकेंड। सॉरी, ये रहा आपका कोन। ये रहा आपका एक्सिस। आई वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस हैविंग कोन ऑफ रेडियस r and height is h. And mass is capital M. Mass of cone capital M, base radius capital R, height
h, इसमें मैं एंगल अल्फ़ा भी दे सकता हूँ, सेमी एंगल subtended is equal to alpha. Okay, so take some 5 to 10 minutes to think on your own how can you calculate the moment of inertia of this kind of a mass distribution. I'm giving you 5 minutes, just try it. If you're able to do this on the spot, that means थोड़ा सा आप में क्लैरिटी आ गया है और फ्यूचर में कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट्स को लिए आप कर सकते हो. Otherwise you need a little bit more practice. हो गया सर. Write the answer in the chat. Sanjay has obtained the answer. Your answer is very much correct. Very good, Sanjay. Thank you, sir. Try to imagine this 3D mass distribution to be made up of something simpler, whose moment of inertia you already know, and then try to integrate over that. Otherwise, if you want सर सर अनम्यूट 2-3 मिनट्स और दे दीजिए. you hear me? Yes. यस सर. Okay, okay. पहले म्यूट हो गए थे. Okay.
Rishi Kumar has also obtained it. Very good, Rishi Kumar. Come on. Just 2 students, come on. Akriti has also obtained it. Very good. Aditya also. All right, 4 students. Sachin also. Okay, good. राहुल हो गया? यस सर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ। बताओ, वी शुड imagine this mass distribution to be made up of what kind of known objects? Disk. Very good. So we can imagine that this cone is made up of a large number of disks stacked on top of one another having different radii. So एक डिस्क है आपका यहाँ पे, दूसरा डिस्क आपने ये बना लिया, फिर तीसरा डिस्क ये बना लिया, चौथा डिस्क ये बना लिया, फिर पांचवा डिस्क ये, फिर ऐसे करके you imagine that this entire body is made up of a large number of disks stacked on top of one another with decreasing radii such that it creates a conical structure. Okay, so let me take a random disk here. The disk having a radii of small r, and let it be at a distance of, let it have a width of dx, and we need to choose some kind of a reference frame for x. Okay, so you can either choose the base or you can either choose the top vertex. Okay, so let me choose the reference frame for x to be at the top. You may have chosen the base, it's perfectly all right, doesn't matter. And this is x is equal to h. Okay, so from here I calculate what is the distance of this disk. So this is the distance x. Okay, so how far the disk is from one end. Okay, so I've chosen the coordinate reference frame at such a location that from there I'll calculate the distance of every single disk. So whether it's the base or whether it's the top edge doesn't matter, it's up to you. Okay, so this mass element has a width of dx, radius of r, and a mass of dm. Okay, mass of dm, obvious, volume of dv, and on. Okay, so let us calculate therefore if it has a uniform mass density. We are of course going to imagine uniform mass density. Uniform mass density of rho, and rho is simply equal to mass upon volume. Okay, what is the volume of a cone? 1 by 3 pi r square. 1 by 3 pi r square h. So this is equal to 3m upon pi r square h. So now for the disk element, what is the volume of a disk element dv? It is pi r square dx. Okay, and mass
of disk element DM. is dm dm. rho dv. So rho is equal to, if uniform mass dm density, dt. dm upon dv, or dm is equal to rho dv. So rho is nothing but 3m upon pi r square h, and dv is equal to pi r square dx. Okay, so or dm is equal to, so pi gets cancelled here, dm is equal to 3m r square dx upon r square h. Now यहाँ पे r भी है और x भी है, so we can't have two separate unknown variables, so we need to find out a relationship between them. So from the above geometry we can say And alpha is equal to r upon x. Yeah, if I consider these two masses, or if I consider these two triangles, first this triangle, okay, and second this triangle, okay, if I consider these two triangles, then I can say that r upon x is equal to capital R upon h. Yes. Yes. This can be seen from similar triangles theorem, or it can be seen from the fact that the slope of tan alpha is equal to r upon x by capital R upon h. This is obvious to everyone, or this is explanation. If you look at tan alpha, it Yes, can be sir. written as r upon x, or it can be written as capital R upon h in both these two triangles. थोड़ा डिटेल में जाऊंगा तो मैं इसको नेम कर दूंगा, मैं बोलूँगा जो O है, ये P है, ये Q है, ये M है, सो इन द ट्रायंगल ये whatever, इतना नहीं जाऊंगा, ठीक है. सो इन these two triangles you can come up with this relationship. So therefore from this relationship I can write or r is equal to capital R upon h x. Okay, this I can use here to remove one of the variables. So this is equal to 3m r square dx upon r square h into h, है ना, 3m upon r square h dx, तो r square h square आ जाएगा यहाँ पे. सो आपका r square हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आ गया 3m, अच्छा यहाँ पे x भी तो है, x dx, 3m x dx upon h cube. This is dm. Yes. 3m pi cancel. सर This is एक्स the स्क्वायर आना चाहिए. स्क्वायर कहाँ गया सर? r square x square आना चाहिए. Yes, h yes. square आएगा. Yes, x square आएगा, ठीक है. All right, so this is the mass of the disk element. Okay, that's it. So this is the mass of the disk element. So this is the mass of the disk element. Now you want to calculate the moment of inertia of disk element about z axis. So about the z axis, so let's suppose this is a z axis, so this is just equal to I diz is equal to half dm r square. dm R r square square dm r square. So this is equal to half dm r is equal to capital R upon h x square. So this is equal to half dm r square upon h square x square. All right, so moment of inertia of solid cone about z axis, that is made up of disks stacked on top of each other, a disk stacked on top of each other, is Iz is equal to integration of dm upon 2 r square x square upon h square. So this becomes from 0 to h,
x के टर्म्स पे इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो x वैरीज फ्रॉम 0 to h, from 0 to h, so this becomes 0 to h half r square x square upon h square, dm की वैल्यू क्या है सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, इंटू 3m x square dx अपॉन h क्यूब। तो ये आपका हो गया 3 कैपिटल M r square अपॉन 2 h to the power 5, 3m r square अपॉन 2 h to the power 5 x to the power 4 dx, यही है 0 to h। 3m r square अपॉन 2 h to Yes, the 5, sir. हाँ यही है, ठीक है, that's it. So you just solve this integration, 3m r square upon 2h to the power 5, so this becomes into 1 upon 5 x to the power 5 from 0 to h, so this is equal to 3m r square 2h to the power 5 into h5 upon 5, so this gets h5 gets cancelled and you end up getting 3 upon 10 m r square. That is all. This is the moment of inertia of a solid cone with respect to an axis perpendicular to its base and passing through its geometrical axis. This is your answer, as simple as that. Moment of inertia of solid cone about geometrical axis passing through its base. ठीक है बेटा, everything is clear? Excuse me, sir. Yes. Sir, let us suppose a cone with no height, means the height tends to 0. Then in that case, what is the dm? That is just the mass of the cone. No, sir. सर वो जो इक्वेशन है उसमें सर h क्यूब आ रहा है सर, dm इक्वल्स टू, नीचे देखो h क्यूब आ रहा है, if h tends to 0 तो dm इक्वल्स टू इन्फिनिटी। h 0 हो ही कैसे सकता है, कौन सा बचेगा ही कहाँ वो? नहीं, x भी तो चेंज होगा ना फिर, x is also tending to 0 ना then. हाँ, yes sir. dx is also tending to 0. ऐसे दिमाग में क्वेश्चन बना लिया। x भी 0 हो जाएगा, कैपिटल M तो इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ द बॉडी, और वो फिर कोन ही नहीं रहेगा, वो तो आपका फिर एक डिस्क स्ट्रक्चर बन जाएगा हैविंग अ मास m. आई एम श्योर दैट दिस विल कन्वर्ज इनटू सम काइंड ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी, प्रोबेबली 1/3, है ना? Anyways, any questions from here in this particular problem? No, sir. There can be further आप कुछ further homework ले लो, आप खुद से कर लेना. I cannot, it's not possible for me to do all objects because there are, to be very precise, infinite objects out there, but I have tried to do some standard problems. Furthermore, circular disk तो आप कर ही लोगे, ठीक है? मैंने उसके लिए किया था, मैंने यहाँ पे जो इसके लिए किया था, ये जो किया था मैंने, इसके जगह पे आप R1 इज इक्वल टू 0 करके इंटीग्रेट कर दोगे तो वो डिस्क के लिए हो गया, ठीक है? और क्या है, होलोस्फीयर के लिए आप ट्राई कर सकते हो, होलोस्फीयर के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ओके, assuming that is made up of a large number of rings. और क्या बचा हमारे लिए? होलो कौन सर? क्या? होलो कौन? होलोकोन, होलोकोन, होलोकोन थोड़ा सा होलोकोन के लिए भी आप कर सकते हो. ट्रायंगुलर प्लेट बची है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट के लिए भी आप कर लो, आप तो कर ही लोगे आई थिंक. Triangular plate and what more? I think vast majority of the stuff we have done. Rod के लिए हमने किया था ना 2 लेक्चर पहले, रॉड के लिए किया था ना.
रॉड का हो गया नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रॉड के लिए भी हमने किया था। यस सर। ठीक है सो हमने रॉड के लिए कर लिया Function यूनिफॉर्म types मास का। डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए कर लिया, हमने स्लैब के लिए कर लिया, हमने रिंग के लिए कर लिया, हमने डिस्क के लिए कर लिया, हमने सिलेंडर के लिए कर लिया, हमने स्फीयर के लिए कर लिया और हमने कोन के लिए कर लिया। ठीक है, सो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैव डन। ओके, नाउ इसमें क्या हो सकता है कि थोड़े से कुछ एक्सिस को चेंज करके दे देंगे। ठीक है, कोन में आपका जो ये एक्सिस है बोलेंगे कि ओके देन द एक्सिस इज पासिंग थ्रू टेंजेंट टू द बेस, समथिंग लाइक दैट। ओके, फॉर दैट you know the perpendicular axis theorem, you know the parallel axis theorem, so there is a lot of so ये perpendicular axis theorem या फिर parallel axis theorem ये अप्लाई करके आप एक्सिस में अलग अलग एक्सिस के लिए यू कैन फाइंड आउट। सो दिस इज एज फार एज द कैलकुलेशंस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस 1D 2D and 3D mass distributions are concerned. Now it is not enough to know the moment of inertia, right? Why do we need to know the moment of inertia? We need to know the moment of inertia because we want to understand what role the mass distribution plays when it is undergoing some kind of a motion. So for example, अगर आपके पास जो है कोई एक डिस्क है जो एक किसी सरफेस में रोल आउट कर रहा है, तो उसमें जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट हैज़ अ डिपेंडेंस ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इफ यू डू नॉट नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू कैन कैलकुलेट, यू कैनॉट फाइंड आउट द नेचर ऑफ द डायनामिक्स ऑफ द प्रॉब्लम। सो फॉर दैट यू जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स के अंदर कितना एक्सेलरेशन होगा ये पता करने के लिए हमें मास जानने की ज़रूरत है, उसी तरह से किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन में टॉर्क के प्रेजेंस में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो जानने के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानने की ज़रूरत है। एंड फॉर दैट दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स दैट वी हैव डन। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू सम एनालिसिस ऑफ हाउ वी कैन अप्लाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू स्टडिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायनामिक्स व्हिच टू अ सर्टेन डिग्री यू ऑलरेडी नो, बिकॉज हमने टॉर्क वगैरह डिस्कस किया था ना, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सारा डिस्कस किया था, यू रिमेंबर 3-4 लेक्चर्स बैक। थोड़ा सा डिस्कशन बाकी है इफ रिगार्डिंग इफ देयर इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन हैपनिंग एट द सेम टाइम। लेट्स सपोज अगर कोई एक व्हील है जो एक हिल के नीचे जो है रोल डाउन कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। सो इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन व्हाट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस यू कैन डू एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ डायनामिक्स यू कैन लुक फॉरवर्ड टू, थोड़ा सा वो डिस्कशन बाकी है विच वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास। आई वॉन्ट टू हैव अ क्लास टुमारो इफ पॉसिबल, शाम के टाइम पे यस सर 6 से 9 के बीच में कोई भी टाइम में फिक्स कर दो चलेगा। तो सर ये वाली शाम सीट का का 2 से 5 तो 3 से 5 वाली शाम को इसी 3 पे से set 5 करो। अब कह रहे हो? दोपहर को ले लो सर। ट्यूसडे सर शाम को नहीं सर, या तो दोपहर को रख लो या रात को रख हाँ लो। सर, शाम को मत रखो सर। वो रात को कह रहे सर 11 to 1 क्लासेस नहीं होती हमारी। कल मंडे को, मंडे मंडे को कल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ कल रख लीजिए रात 1 to 3 रख लो सर। एक या कल दिन। सर 5 बजे से पहले सर। हाँ 1 से 3 के बीच में रखो सर। अच्छा अभी 3 देखा, से 5 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था क्लास में कंसेंसस ले लो, तो आ गया consensus। सर आप बता तो किस टाइम देखो Continuous class हो जाती है, मेरा मजा नहीं आता। आई हैव अ क्लास टुमारो टिल 1 मॉर्निंग में, तो मैं नहीं ले पाऊंगा। 3 to 5 बेस्ट है कल। आई कैन टेक 3 to 5 नो प्रॉब्लम। यस सर 3 to 5 बेस्ट है। कल 3 to 5 के लिए यू गाइज आर ऑल ओके? यस सर। थोड़ा सा जल्दी छोड़ देंगे, 1.5 hour का ले लेंगे, ठीक है, अगर Yes, आप sir, लोग ठीक। थक जाते हो तो है, yes, sir, टुमारो 3 to 5 आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास। ओके ओके सर। चलो फिर आज के लिए फिर यही रैप अप करते हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है मास कंपेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशंस। ऑलराइट, यस ओके सर। सर, थैंक ओके सर चलो गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय सर। थैंक यू।